everyone, what's up, what's going on? In today's video I will be showing you a very easy and simple summer friendly makeup look, and the best part about today's video is that I will not use any foundation, concealer, not even a compact. So let's get started. Starting off with the sunscreen first, because that's the most important thing during summer. Here I'm using Sugar Citrus Got Real SPF 30 sunscreen. This sunscreen is really good. It's a very lightweight, बहुत जल्द स्किन पर absorb हो जाती है, and after that ना एक ग्लो प्रोवाइड करती है जो कि बहुत ब्यूटीफुल दिखती है. Next I'm using Sugar Base of Glory Pore Minimizing Primer. It will even out your skin, it will blur out all the pores without clogging them, and it will give you smooth, flawless skin. Now we are not using a foundation, still we will be using a primer just to ensure हम जो भी base use कर रहे हैं वो long lasting हो. ठीक है. Next, instead of a foundation, we will be using Sugar Goddess of Flawless BB Serum in the shade 47 Borgia. Oh my god, this product is so good. You will not need a powder to set it. ये ना automatically set हो जाती है आपकी skin पर, बहुत ही flawless दिखती है. As you guys can see that I am using very little amount because I don't want that full coverage. अगर मेरी dark circles दिखती है, अगर मेरी acne marks दिखती है, that's completely fine. I'm okay with it. अभी मैं एक brush लेके इसको अच्छे से blend कर लूँगी ना. To be honest, I usually blend my BB creams with my fingertips, but just to be presentable मैं ना brush use कर रही हूँ. तो मैं इसको अच्छे से blend कर लूँगी. आप लोग देख सकते हो कि मुझे उतनी ज़्यादा कवरेज नहीं मिली है, येट मेरी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस दिख रही है ना. फिर हम लोग यूज़ करने वाले हैं शुगर कंटूर फोर्स फेस पैलेट. मैं बहुत ही लाइट कंटूरिंग करने वाली हूँ. इट्स बिकॉज अभी देखो बेस हम लोगों ने बहुत ही सिंपल रखी है, बहुत ही सटल बेस रखी है. अभी अगर हेवी कंटूरिंग करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा वो अनइवन दिखेगी फेस. सो आई एम गोइंग फॉर अ वेरी लाइट कंटूर, बट ब्लश में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ जस्ट टू गेट दैट फ्लश्ड चिक्स. इस पैलेट की ना ब्लश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. इनफैक्ट शुगर की ब्लशेस मुझे बहुत पसंद आती है बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली पिगमेंटेड एंड ईजी टू वर्क विथ. थोड़ा सा हाइलाइटर भी अप्लाई कर लेंगे बिकॉज ऑब्वियसली फाउंडेशन या तो बीबी क्रीम अप्लाई करने के बाद स्किन की जो नेचुरल ग्लो है ना वो चली जाती है. तो हाइलाइटर भी अप्लाई कर ली है. For the eyeshadow, I will be using Sugar Too Good To Be Dual Eyeshadow in the shade Cinnamon and Nutmeg. I will be using the matte liquid eyeshadow as an eyeliner, and then I will smudge it just to tone down the color because for today's video I really wanted to keep everything simple and subtle. Now here I'm giving you a few options. If you wish, you can use it on all over your eyelid and then just blend it out, or you can do the exact same steps that I'm doing, and after that you can use the black eyeliner on top of it just to enhance the eyes. Once I'm done with the smudging thing, I will be using the shimmer shade on my inner eye corner. Okay, for the mascara I'm using Sugar Lash of Titan's Volumizing Mascara. For the lipstick, I have two options. First one is the Sugar Matte Attack Transfer Proof Lipstick in the shade 10 Deep Peach Mode, which is a beautiful peach color, but somehow this color was flashing out my skin, so I skipped it and I went for the Sugar Matte as Hell Lip Crayon in the shade Viola, which is a beautiful mauve nude color. And here is my final look. I really hope you guys enjoyed today's video, and see you guys soon. Bye and take care.